Okay, good morning. So today's topic is mail merge, and it's a very important topic. Whenever we want to send one document to multiple people, then we can use this option, right? The important thing is like if you want to send one invitation to 100 people at the same time, so instead of typing invitation for everybody 100 times, what we can do is we can create a list of 100 people, and we can create one single document, and then we can merge both of them to create multiple copies of the document, right? So that is all mail merge about. So let's just move on to the book material. See, if you want to send some letter or invitation to many people at the same time, then this mail merge tool is used, right? Now, how do we use this mail merge option? We need to have two different documents. One is the main document. Main document is the letter or the invitation that you want to send, right? And secondly, we need to create a recipient list of people to whom you want to send the data. That list of people is also called as a data source, right? And then third thing is we link both the things, merging the data source with the main document. मेन डॉक्यूमेंट में हमने इनविटेशन टाइप किया, डेटा सोर्स में हमने वो लिस्ट बनाई जिन जिन लोगों को हमने वो इनविटेशन देना है, और थर्ड स्टेप इज both are merged together, both are joined together. So these are the three steps for using this mail merge option. Now how do we start? We have to go to mailing tab. This is the mailing tab, you can see here. Then click on start mail merge option icon. There's an icon over here. Basically it's a drop down list. So the moment you click, you will get one drop down list, and it will ask you what do you want to send, right? Like if you want to send a letter, or you want to send an email, right? Or you want to create an envelope, or you want to create a normal word file that you want to send. So plus labels, directories, these are also options. So you have to choose the things that you want to apply, right? Like if I want to send an invitation letter, so I'll choose a letter option from here. Fine. So select this step-by-step mail merge wizard option. Now, moment you click this, you will get one mail merge, a small window kind of thing, which lies on the right side of the Word file. From there, you have to select these options. जैसे हमने letter भेजना है, तो we'll select letter. Then click on this next button, right? Next is select the starting document. Use the current document, start from the template, start from existing document. Now, what is this basically? So step 2 may, it will ask you that do you want to use the current file which is open right now? You want to use that file, or you have already saved certain letter, certain invitation letter, and you want to send that. So उसके लिए third option है. Or if you want to use a template, there are various templates available. So if you want to use a template, then you have to use this option, start from template, right? So by default it is use the current document. So select this, click on next over here. Next, third step is you have to create the data source. Data source मतलब वही list of participants, right? So उसमें भी there are three options. First is type a new list, right? If you want to
if you're doing it for the first time, let's say, so click on this type a new list option, then there's a create button for the new list. Click on the create button and then you can create a list of people. If you already have a list, you want to use the same list, then we go with the first option here, use an existing list. And if you have email IDs and other details saved in Outlook software. Outlook software is it's a part of Microsoft package. Outlook सॉफ्टवेयर एक ऑफलाइन ईमेलिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ईमेल्स कर सकते हो, बट वो ऑफलाइन रहता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है सिस्टम पे, एंड व्हेनेवर यू कनेक्टेड टू इंटरनेट यू कैन जस्ट सेंड ए ईमेल, यू कैन शेड्यूल द ईमेल्स, और उसमें हम लोग एक वी कैन सेव द list of contacts also, like we save do it on mobile phones. जैसे हम मोबाइल फोन्स में कॉन्टेक्ट लिस्ट बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं, the same way we can save the contact list, the email IDs and other details of your friends, families and people in that, in Outlook software. So if you want to use those records, if you want to use those names, those email IDs or whatever, so then you can use this select from Outlook contacts option. Then you have to import that from Outlook software, right? And if we are doing it for the first time, then we'll always go with type a new list. तो टाइप एंड न्यू लिस्ट करने पे नीचे क्रिएट बटन आता है, क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन. सो व्हेन यू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन you will get new address list window, right? Here you'll see title, first name, last name, company name, address line, and all these things are already there. You just have to enter the things, right? But if you want to customize these columns, I don't want title, let's say I don't want company name. So for that you have to customize the whole table. उसके लिए नीचे एक बटन है customize columns, right? Click on this. This is the customized address list. Here are all these columns which are there in that address list. तो यहाँ से आपको जो remove करना है, select that and click on delete button. And if you want to add some more from your side, click on add button, then type the name, that will also be added. So you can customize, you can make changes. जो जो columns आपको चाहिए वो रखो, बाकी remove कर सकते हो delete option से, और जिनको rename करना है rename का option भी है, right? So like this example is given that if you select title and click on delete, you will get this message on the screen, message dialog box. Are you sure you want to delete title? Yes करने पे delete हो जाएगा, no करने पे it will remain there, right? And this is how we rename. If you click on this rename button, so type the name of the field, you have to write the name, right? Similar option comes when you click on add button also. This is basically for add field. अगर आपको अपनी तरफ से नया column add करना है, when you have to click on this add button and you'll get this dialog. There you have to type the name of the column that you want to enter and click OK. So that name column is also added over here, right? So deletion, adding and renaming can be done based on these options, these buttons. And once you are done with all, click on OK button, right? You'll come back to the new address list. ये जो यहाँ पे थी blank. Now you have to add up the data. यहाँ पे आपको list में data add करना है. जैसे for example, you can see Rahul Singh, address is written, city is Noida and home number. Likewise, Meenu Chopra and other details. Likewise, you keep on adding. यहाँ पे आप type करते जाओ. ये Excel sheet की तरह है. Keep on typing. And once everything is over, then click on OK button to save this address list, right? So when you click on OK, the system will ask you to save this address list somewhere. So you give a name, right? This is the save address list option. Choose a location and give a name to the list and click on save button, right? Now this file can be used later on if you want to. If you're doing it, if you're creating an invitation for the second time, third time, and you want to use the same address list, we can use this list from this location wherever we are saving, right? So by default,
All these address lists are saved in my documents. My documents में एक folder होता है my data sources. अगर वो नहीं है तो create हो जाएगा, and then you click on, you'll find this address list there, right? All these address lists are saved with the extension MDB. File extension important है, exam में पूछे जाते हैं, you must know it, right? So once you save it, click OK to confirm. Right, this is the list that we have selected. Click OK to confirm. यहाँ पे आपको ये सिलेक्शन करना होगा किस किस फ्रेंड को आपने डेटा भेजना है. Click OK to confirm. Then step number 3 to 6 we have to start with. Now mail merge task pane again appears on the right side. This will task pane will come up, and if you have already created this list, then go with the existing list radio button. यहाँ से existing पे जाइए. अगर आपने ये पहले से सेव करके बनाया हुआ है ये address list, तो you can go with this existing link. और अगर आप नया टाइप कर रहे हो तो type a new और go with Outlook Express, right? Existing link पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे browse बटन appear हो जाता है. New करेंगे तो यहाँ पे create ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, तो select your list from here, right? Then click on next button. Now when you click on next, fourth step is, right, you can see this is the fourth step. यहाँ पे आता है, if you have not already done so, write your letter now. Right, you will have the screen over here, white area, wherever the document is. Type whatever you want in the invitation, type it there. Plus we also have to add up the names or the location where the name should come. ठीक है, जैसे मैं ये देखो यहाँ पे एग्जांपल है, ये आपने लेटर टाइप किया, यहाँ पे आपको एक ग्रीटिंग लाइन चाहिए, ऊपर आपको एड्रेस ब्लॉक चाहिए, राइट? नीचे आपको नाम चाहिए, या इफ यू वांट इट फ्रॉम द लिस्ट. ये हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट से पिक कर रहे हैं, राइट? अब ये लिस्ट से पिक कैसे करना है? नाउ सी हियर, एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो दिस इज द एड्रेस ब्लॉक विंडो दैट विल कम अप. यहाँ पे आपको वो प्रीव्यू दिखाएगा, जो भी आपने उस एड्रेस लिस्ट में डेटा ऐड किया था वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा. और फ्रॉम हेयर वी कैन चूज द फॉर्मेट ऑफ द एड्रेस लिस्ट और द नेम दैट इज गिवन देयर. फॉर्मेट में जैसे देखो यहाँ पे सिर्फ नेम है, नेम के साथ में मिस्टर लगाना है नहीं लगाना है, एज सच यहाँ से वो फॉर्मेट वी हैव टू चूज, right? And if you don't want this address, then remove this selection. And if you want to show the address also, then you have to select this postal insert postal address option. तो आपको एड्रेस दिखाएगा. अगर आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया है तो सिर्फ नेम इंडिकेट होगा, right? So likewise, select the things, click OK, so you will get address block like this, right? Address block आपका यहाँ पे दिखाएगा. That means your address will be added automatically when you finish up everything. और जितने भी आपके उस एड्रेस लिस्ट में नाम हैं या रिकॉर्ड्स हैं, उतनी नंबर ऑफ कॉपीज इसकी बन जाएंगी इस लेटर की, और हर एक पे अलग अलग इंडिविजुअल एड्रेस जो है वो अपेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट? देन वी कैन ऑल्सो एड अप ग्रीटिंग लाइन्स. ग्रीटिंग लाइन्स में क्या होता है, जैसे रेस्पेक्टेड सो एंड सो, या रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मीनू शर्मा या मीनू चोपड़ा, जो रेस्पेक्टेड के साथ में नाम भी चाहिए. तो सेम यू क्लिक ऑन ग्रीटिंग लाइन, राइट? एंड देन जैसे ये देखो, डियर राहुल सिंह, राइट? डियर एंड राहुल सिंह, हाउ दिस राहुल सिंह इज कमिंग अप, ये आप एड्रेस लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऐसा ही एक विंडो खुलेगा जहाँ पे आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए आपको, यू हैव टू सेलेक्ट दैट फॉर्मेट, so that will appear here as a preview, and click OK. So we'll get this greeting line also, right? Then go with the next button. Next, fifth one is
preview the things, there you can see आपका लेटर कैसा दिख रहा है. जैसे you can see it here, ये जो दो एरोज हैं, दो बटन एरो बटन हैं, इससे आप जितने भी आपके रेसिपेंट्स थे एड्रेस लिस्ट में उतनी नंबर ऑफ कॉपीज यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन फाइंड आउट. जैसे रेसिपेंट 1 का आपका कैसा प्रीव्यू है, ये इस एरो बटन पे क्लिक करो तो नेक्स्ट वाला जो रेसिपेंट है उसका एड्रेस कैसा दिख रहा है, यू कैन चेक इट देयर, राइट. Then finally click on complete the merge option. When you click on complete the merge, आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे. One is print and then is edit individual letters. अगर आपको चेंजेस करनी है लेटर्स में, then we'll go with this edit option. Or if you want to print it directly, then we'll go with the print option. ठीक है, print option में ये दो डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं. All current record from dash to dash. अगर आपको सारे प्रिंट करने हैं, क्लिक ऑन ऑल. इफ यू वांट टू प्रिंट ओनली द करंट डॉक्यूमेंट, करंट मतलब जो सामने विजिबल है, सिर्फ वो पेज ही प्रिंट करना है तो करंट रिकॉर्ड पे जाओ. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए, जैसे मान लो एड्रेस बुक में 10 एड्रेसेस थे, आई वांट द प्रिंट आउट ऑफ 2 to 4 ओनली, तो आई पुट 2 to 4. तो सेकेंड नंबर पे जो एड्रेस है, थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो एड्रेस है, ये 3 पेजेस का प्रिंट होगा, बाकी प्रिंट नहीं होगा. ठीक है. And if you go with edit individual letters, there it will ask you which individual letters you want to go with, all, current, or again from dash to dash. It will open up one new file, new document. There it will show you those records that you asked from this new merge to new document option, right? And then that new file can be saved later on, right? So that's how we can use this mail merge full option, right? So let's just see this. इसको हम एक बार करके देखते हैं. Let me open one blank file first of all. Okay, let's do one practice. Now go to the mailing group. मेलिंग टैब में जाना है, स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे जाना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे जाएंगे. एज यू कैन सी दिस पेन हैज अपीयर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. यहाँ से लेट्स गो विद लेटर. अगर हम इनविटेशन जैसे बर्थडे इनविटेशन भेज रहे हैं, लेट्स से, we'll choose letter, click on this next button. How do you want to set up your letter? Use this page, or you want to use a template, or if you have already saved certain file, so you can use this option. So I'll go with use current document. Click on next. Now here you have to create a new list, or you already have a list, then you can use the existing list. हम new पे जाते हैं, type पे new list. यहाँ पे create button आया, click on the create button. Now we'll get that address list, address book list. You can see here, right? यहाँ पे वही है, title option है, first name, last name, company name, address 1, address line 2, city. It's a long list. So let's change this. I'll go with customize column button, and title I don't want, so I'll go with delete. Yes, this will be deleted. First name I want to rename, इसको मैं rename करता हूँ, सिर्फ will put name only. Last name will delete, right? Company name हम delete कर देते हैं. Address line 1 रहने देते हैं, 2 delete कर देते हैं. Address line 1 को हम सिर्फ address कर देंगे, rename कर दिया मैंने. City state रहने देते हैं, zip code will delete. Country I am deleting.
राइट। होम फोन की जगह पे आई पुट फोन नंबर, फोन ओनली, rest all I'm deleting. So let's make it a simple one, right? So we have done, we have changed the address list columns, name, address, city, state, and phone. हमने 5 रखे हैं, as you can see here now. Let's put the entries, like let's say Amit, address, let's say Model Town, city Kapurthala, Punjab, phone number, any number you can give. Click on new entry, Ajay, let's say urban state, Jalandhar, Punjab, and any number can be given, right? एक और बना लेते हैं, Raman, let's say model town again, any number can be used. So click OK to finalize. So OK करने पे वो पहले तो वो save as dialog box खुलेगा कि what you want to give, what name you want to give. I'll write friend list here, right? मैंने फाइल नेम रखा है friend list और it is saved in documents. Documents में my data sources folder है, right? Click save. Now it will ask you कि ये फ्रेंड लिस्ट में से किस किस पर्सन को आपने इंक्लूड करना है इस डॉक्यूमेंट में. बाय डिफॉल्ट सारे सेलेक्टेड हैं, अगर आपको कोई रिमूव करना है तो आप यहाँ से सिलेक्शन से रिमूव कर सकते हैं, राइट. आई गो विद ऑल, हम सारे ले लेते हैं, तीनों के तीनों, 3 एंट्रीज हमने डाली. सो क्लिक ओके, राइट. नाउ इट इज शोइंग यूज अ existing list. So then click on next. Now we have to customize the letter. सबसे ऊपर टॉप पे मान लो मुझे एड्रेस ब्लॉक चाहिए, सो आई विल क्लिक ऑन एड्रेस ब्लॉक. ये प्रीव्यूज हैं कि जैसे फर्स्ट केस में हमारा अमित कपूरथला पंजाब है, ये अजय जलंधर पंजाब है, राइट. बट अगर आपको मिस्टर साथ में लगाना है, जैसे ये मिस्टर है, तो we can choose the format from here, Mr. and Miss, right. Include postal address format according to the destination country. Right. Then click OK. So you can see address block यहाँ पे appear हो गया. इसके बाद हम greeting lines डाल देते हैं. Dear, जो भी नाम है यहाँ से नाम सेलेक्ट कर लो, Dear so and so, comma, right. Greeting line में Dear sir, मैडम आ सकता है. Okay. Click OK. Address line is also added. Then you can write your letter. You are invited on my birthday party on, let's say, 36/2021 at 5 p.m. So you can write your full letter here, right? I am writing a simple line, right? Thanks and your name, right? Then click on the next button. It will show you the preview. जैसे ये हमारा फर्स्ट लेटर था, फर्स्ट हमने अमित कपूरथला पंजाब डाला था. नेक्स्ट करो अजय जलंधर पंजाब,
Raman, Jalandhar, Punjab. Likewise, right? Can click on complete the merge option. Now we have two options. Either we can print it or we can go with edit individual letters. Now, if you have a printer, go with the print button. These are the three options. Print all files, current record only, and from the number you can give from record number 1 and 2. जैसे हमारे केस में 3 records are there. You can go with 1 or 2 or 2 or 3. सारे चाहिए तो ऑल करेंगे. करंट करेंगे तो रमन वाला जो पेज है सिर्फ ये प्रिंट होगा. ठीक है. और वी कैन गो विद एडिट इंडिविजुअल लेटर्स. इसमें भी अगेन वील हैव ऑल द ऑप्शंस. आई गो विद ऑल. राइट. सो नाउ यू कैन सी अ न्यू डॉक्यूमेंट हैज बीन क्रिएटेड. नया फाइल. ये हमारे दो डॉक्यूमेंट्स हैं. ये हमारी पहली वाली थी और ये हमारी न्यू डॉक्यूमेंट हैज बीन क्रिएटेड. द नेम ऑफ द फाइल इज लेटर्स 1. right, this is the first copy. Go down on the second page, second copy. Go down to the third page, third copy. For all these 3 records it is added. Likewise, multiple copies of one document can be created. So that's the use of mail merge basically. ठीक है. थोड़ा clear हुआ. बाकी you try it at home, and if you still need some help, you can just discuss in the next class, right? So that's it from my side today. So kindly practice at home, and as I told already that if you people need kind of assistance, any kind of help, just send me a message. Fine.